Hello dear students, welcome to the chemistry sessions. Very good morning to everybody. Last lecture we have been seen this is one of the coupling types of the reaction. Herein we discuss the aromatic electrophilic substitution reactions. What is the reaction? Aromatic electrophilic substitution reaction. यहाँ पे हमको aromatic electrophilic substitution reaction लेना है particular of the halobenzenes. So here we know that this is the halogen atoms. So these halogen atoms which are having the electrons. उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा डोनेट करेगा व्हेनेवर दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स सो व्हाट हैपन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा X पॉजिटिव उसके बाद यहाँ पे जनरेशन होगा दिस इट इज गोस टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज हियर डबल बॉन्ड हियर नेगेटिव चार्ज हियर X पॉजिटिव अगेन व्हाट the resonance structure is continuously takes place here what this negatively charge is created at ortho and para position. What I can say is negatively charge is created at ortho and the para position. It means that the structure number third one and structure number second one and structure number what first one. The structure number first second third is indicated. It means that ortho और para position पे क्या आ रहा है ortho para position पे negative charge create हो रहा है. देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है इसका मतलब क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होगा ऑर्थो और पैरा पे होगा तो ऐसे कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है so that is nothing but nitration sulfonation halogenation okay so that is what we can say if we are having this is the chlorobenzene हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ना तो यहाँ पे हमको रिएक्शन करना है This is the mixture of HNO3 plus H2SO4. Again what? 2 mole of concentrated H2SO4. देखो यहाँ पे भी concentrated यूज करना है concentrated. This mixture is nothing but nitrating mixture. इस mixture को क्या कहते हैं? Nitrating mixture कहते हैं. This sulfonation H2SO4 sulfuric acid. So the next reaction we can say this Cl2 and AlCl3. अब देखो यहाँ पे हम कभी Br लेते हैं ना Br2 या फिर Br3 यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा इसको बोलते हैं corresponding Lewis acid. So what happen here? Which types of the product is formed? So this is the starting molecule is the chlorobenzene. It is nothing but aryl halide. So that is our formation of which types of the product is possible nitration. This is the chlorobenzene undergoes the nitration. Which types of the product is formed? This is nothing but formation of para nitrochlorobenzene, ortho nitrochlorobenzene. Okay, so here is what this is formation of what? Here the chloro in a molecule. This is formation of SO3H, para chlorobenzene sulfonic acid, and what? Orthochlorobenzene sulfonic acid. So here this is the chlorination of this is the chlorobenzene is nothing but para dichlorobenzene. Again what? Ortho dichlorobenzene. Okay na? Ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene. HCl hydrochloric acid and AlCl3 remaining Lewis acid as a catalyst. Here the formation of what the next types of the compound HCl and here the bromine atom is here what again next order here this is nothing but Cl and this one is the bromine atom. तो यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिला यहाँ पे पैरा वाला मिला. So which of the this one is the major, this one is major, this one is major, this one is major. Why this is major? Because of what? Absence of steric crowding. ये दोनों ग्रुप के बीच में steric crowding absent है. Bulkier group है away far to each other. That's why this is the absence of the steric hindrance, steric crowding. That is the major and this types of the product is the minor. यहाँ पे Lewis acid मतलब SBr side product होगा और FeBr3 Lewis acid remain 8 रहेगा. So that is nothing but what? Nitration reaction, sulfonation reaction, and this is nothing but chlorination and bromination is nothing but halogenation reaction. Chlorination and bromination is the halogenation reaction. इसका मैकेनिज्म हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि which type how the mechanism is takes place. Okay, so again no problem, I will take this is part of the mechanism in continuous lecture. So next lecture we will see this is the two remaining reaction. This is the Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. तो यहाँ पे हमने आज 3 रिएक्शन कंप्लीट किया. कौन सा रिएक्शन कंप्लीट किया? नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड हैलोजेनेशन रिएक्शन. यहाँ पे क्लोरोबेंजीन अपन यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं. ओके, सो दीज आर द हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन आर द aromatic electrophilic substitution reaction of aryl halide. Okay.